Chapter 2, the professional and ethical duty of accountant. कोड्स ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। ये दो ही चीजें हैं पूरे इसमें। Introduction: A number of user groups rely on financial statements to make economic decisions. It is important that these users are not misled. The ethical beliefs of individual accountants may be too simplistic when dealing with real life complex ethical dilemmas. Accountants must study ethics in order to develop skills that help them to decide the right course of action. Approaches to accounting and ethics. Rules. Some national accounting standards are primarily rule-based. In other words, they provide extensive and detailed guidance about accounting treatment of particular transactions. This approach is sometimes criticized for nurturing a rule book mentality, मतलब textbook mentality, complying with the letter of the law rather than the spirit of accounting standard may actually prevent transactions from being faithfully represented. Their principles. IFRS standards are often principle-based, albeit with some detailed rules in place to estimate uncertainties and to increase the comparability. Principles-based approaches to accounting create ethical challenges because of the professional judgment that accountants are required to exercise. An understanding of ethical principles, such as those contained in ACCA Code of Ethics and Conduct, is essential. तो कहते हैं ये एथिकल कोड्स यानी कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें 5 प्रिंसिपल्स: इसका इंटेग्रिटी, बना लेंगे ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका नोट्स बना है ना? हाँ, इसका नोट बना लेते हैं। जैसे इंटेग्रिटी में ऑनेस्टी आ जाएगा, हम्म। ऑब्जेक्टिविटी में फेयर आ जाएगा, नॉट टू नॉट बी बाइस एंड फेयर। तो ऐसा शॉर्ट शॉर्ट पॉइंटर्स टाइप्स बना लेते हैं। हाँ चलेगा, कूल। एथिकल कोड्स। इंटेग्रिटी में ऑनेस्टी आएगा ना, तूने बोला। इंटेग्रिटी। हाँ, अनम्यूट कर ले, इट्स ओके। फिर ऑब्जेक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिविटी में क्या लिखा है? टू नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू हाँ, मतलब ओवरराइड बी फेयर प्रोफेशनल। बेसिकली। हाँ। Not allow undue influence. Not allow undue influence. Professional competence and due care. And due care. इसमें क्या आएगा अकॉर्डिंग टू यू? इंटेलिजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद, एक तो आ जाएगा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ओके। जो रिक्वायर्ड है। दूसरा हम्म। एक्ट diligently and in accordance with applicable technical and professional standards. क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एंड क्या होता है ना? Last wala act diligently and in accordance with applicable technical and ओके professional ओके ओके ओके। standards. मीन्स इन act diligently. Makes sense. Act diligently and in accordance with standards. And in accordance with standards. ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी।
Do not disclose third party information without proper and specific authority. हम्म ये वाली लाइन टू नॉट डिस्क्लोज, ये यहाँ से ना, टू नॉट डिस्क्लोज any such information, any person, any client information लिख देते हैं, any client information to third parties without proper authority. Without proper authority. इसका जब अपन एग्जाम किट का ये करेंगे ना, उसमें मतलब काफी ज्यादा अच्छे से होगा ये सब कवर्ड, मुझे ऐसा लगता है। देखा तूने एग्जाम या- की एक बार भी? नहीं वैसे नहीं, अब तक नहीं देखा। बस मैं सोच रहा हूँ कि लाइक थोड़ा बहुत अगर सर ने पढ़ा दिया ना, उसके बाद चालू कर दूँ। अरे देख, ये वाला चैप्टर तो उन्होंने पढ़ा दिया ना। हाँ, बट लाइक मैं बोल रहा हूँ कि सम्स जैसे एक बड़े वाले सम्स जब सर करेंगे ना। देख, इसमें वैसे सम्स नहीं है। ये तुझे, हम्म तेरे को ऑडिट याद है ना? ऑडिट कैसा हम्म। था? हाँ मतलब स्टेरियोटाइप्स में मतलब वो कितना कैसा डिफरेंट था। आएगा, रेशियो वाले में कैसा था पता है ना, अपने को बात करनी थी पहले तो रेशियोज कैलकुलेट करके करने के बाद। तो वैसे ये जो 30 मार्क 20 मार्क का है ना वो सेक्शन ए भी, उसमें ऐसा आएगा कि 10 मार्क की बैलेंस शीट, 5 मार्क का कैश फ्लो, फिर 10 मार्क का कुछ थ्योरी, और फिर 5 मार्क का कुछ और थ्योरी। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो जब तक सर पूरा नहीं करवाते ना, मैं तब तक एग्जाम किट को नहीं हाथ लगा रहा हूँ, मतलब जब तक एटलीस्ट बैलेंस शीट्स और ये सब स्टार्ट नहीं होता ना तब तक। भाई एटलीस्ट बहुत टाइम है एटलीस्ट ये। 1.5 मंथ तक नहीं लगाऊंगा ऐसा। क्या बात कर रहा है, सीरियसली? मतलब अक्टूबर, हाँ मतलब अक्टूबर से चालू कर सकते हैं ऐसा। आजा नेक्स्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर to comply with relevant laws and regulations and avoid any action that discredits the profession. To comply with relevant laws and regulations. Hmm. To comply with relevant laws and regulations. Comply with relevant laws and regulations. Cool. हाँ, तो इसी बात इन्होंने की है इंटेग्रिटी की। तो इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्यों इम्पैक्ट हो सकती है, तो उसके बारे में मैं बात की कि इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्यों इम्पैक्ट हो सकती है। सो दैट इज प्रॉफिट रिलेटेड बोनसेस, फाइनेंसिंग एंड अचीविंग लिस्टिंग। मतलब जो कंपनी लिस्टिंग अचीव करना चाहती है वो प्रॉफिट रिलेटेड वो मतलब बोनस देने हैं वो। और फाइनेंसिंग का क्या था, लोन के लिए अपन ये निकालते हैं वो आवाज, क्या। तेरी आवाज नहीं मैं बोला फाइनेंसिंग जो है वो वही था ना कि लोन लेने के लिए, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपन ज्यादा एसेट्स बताएंगे, वही ना फाइनेंसिंग। हाँ हाँ। ओके, फिर ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। New accounting standards are frequently issued and older standards are often updated or withdrawn. Accounting knowledge becomes out of date very quickly. In order to comply with the code of ethics, accountants have a responsibility to ensure that they are aware of changes to accounting standards. This is often referred to as CPD, continuing professional development. CPD involves reading technical articles, attending seminars or presentations, attending training courses. Without up to date technical knowledge, it is unlikely that an accountant can produce financial statements that comply with IFRS standards. Material errors within financial statements will mislead the users. ठीक है, नेक्स्ट बात होती है इनसाइडर ट्रेडिंग की। Insider trading is the illegal practice of trading on stock exchange to one's own advantage through having access to confidential information
An example might be if the finance director of the company sells shares in that company prior to the publication of financial results that are worse than market expectations. Many see this as a violation of the duty to prioritize the interest of other company shareholders. Okay, ठीक है. ये ethics, it is not unethical. हाँ, ये वाला, it is not unethical for employees of the company to trade in its shares as long as the information they have used to make the investment decision is largely as a public domain. मतलब वही information अगर पब्लिक के पास है और उतनी ही है एम्प्लॉयज के पास, तो वो लीगल है. The ethical dilemmas become trickier to manage for employees and directors who have access to information that is not public. मतलब ये प्राइवेट की बात हो रही है कि मतलब तब dilemma create हो सकता है. Make sense? Legislation in this area varies between countries. In America, key employees and directors of a company who trade in its shares must report this to the regulator. Okay. Insider trading is a breach of unethical principle of confidentiality. The ACCA Code of Ethics and Conduct states that ACCA members must not use confidential information acquired as a result of professional and business relationships for the personal advantage of the accountant or for the disadvantage of a third party. Insider trading also demonstrates a lack of integrity. मतलब अपन ACCA के members नहीं use कर सकते private information एडवांटेज लेने के लिए. मेक सेंस. फिर आता है एथिक्स इन डिजिटल एज, कंटेम्प्ररी चैलेंजेस. पढ़ेगी? Accountants use and interact with a plethora of new digital technologies. These increases the range of ethical issues that they may face. Professional competence and confidentiality. Professional competence. Accountants must ensure that they have the knowledge to perform their role adequately. They may be required to become proficient with new software relatively quickly and to deal with situations, transactions, or data that they have not dealt with before. The increasing use of the distributed ledger technology, ledgers with no central data store where transactions are recorded in multiple places at the same time, demands technical competence. Errors could have serious economic consequences. Professional accountant must be honest about whether they are capable of dealing with such large volumes of sensitive information. मतलब वही है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रहना चाहिए. यू शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन, अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर हो या व्हाटएवर हो, तो तुम उसमें तुम्हारा स्किल रहना चाहिए कि तुम कुछ भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग यू शुड नो कि तुम क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. विदाउट नॉलेज उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए. And confidentiality is accountants have access to a lot of data. This data may be internal, that is employee related, or external, which is supplier related. Data theft can cause financial loss. Professional accountants must understand local and international laws and regulations around data security and design control to ensure legal compliance. सेम थिंग मतलब भाई कि तुम्हें भाई किसी का भी डेटा लीक मत करो एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखो एंड इंटरनेशनल लॉज को अंडरस्टैंड करो और डेटा सिक्योरिटी एंड ऑल सब प्रोवाइड करके रखो सो दैट it's not easy for anyone to get your data. Okay. Ethics and AI. हाँ पढ़. Ethics and AI. The accounting profession is making more use of artificial intelligence. For example, AI can extract data from PDFs and spreadsheets and populate reports, identify anomalies in spending, which may detect or prevent fraud, detect non-compliance issues such as errors in expensive claims, purchase orders, and sale invoices, which will limit financial loss. The use of AI allows accounting professionals to allocate more of their time to developing strategy and problem solving, but it also raises ethical issues. What will happen to accounting data if AI fails? Will AI be a threat to the employment? Is there a risk of bias in the AI system reviewing the expenses claims of certain employees? तो वही है कि भाई AI के दोनों parts, advantages and disadvantages. Okay. Will it be effectful? And वो था ना यार
हैव यू एवर यूज जेमिनी? तूने कभी जेमिनी यूज नहीं। किया है? हाँ पता है मेरे को क्या रहता है, बट उतना मैंने नहीं यूज किया टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने बहुत यूज किया है। तो टू गेट हम्म अ राइट थिंग दैट यू वांट ना, यू हैव टू प्रोवाइड अ राइट प्रॉम्प्ट। जब तक तुम राइट प्रॉम्प्ट नहीं प्रोवाइड करोगे ना, तुम्हें हम्म। तुम्हारे अकॉर्डिंगली डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाएगा एआई। तो एआई को सही क्वेश्चन पूछना इज ऑल्सो अ टास्क। तो फॉर दैट ओके। ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड। फॉर हम्म। दैट आल्सो ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर तू बोलेगा कि कोई प्रोजेक्ट है, बट देन दैट प्रोजेक्ट विल हैव सो मेनी स्पेसिफिकेशंस, तो तुझे वो स्पेसिफिकेशंस एआई को समझानी रहेगी कि कि हम्म। 20 पीपल है एंड उसमें से 10 पीपल नॉन वेजिटेरियन है, 10 पीपल वेजिटेरियन है, फिर उसमें जैन है, दिस है, दैट है। तो unless you don't give the proper prompt ना, AI will not be helpful enough। इसके लिए वो व्हाट्सएप का जो AI मेटा है वही इतना ना? स्टेबल नहीं। हाँ, या वैसा साकी है, but that's different from Gemini. Gemini is very nice, भाई, very ओके। useful। The impact of ethical and unethical behavior। हम्म। Consequences क्या होंगे? The journals and magazines of professional institute regularly include details of professional disciplinary proceeding uh, क्या है brought against individual members who were believed to have fallen short of the ethical standard expected of them. The consequences of unethical behavior is deliberately presented incorrect financial information as severe. Many accountants have been fined or jailed for not fulfilling their professional duties। मतलब अगर तुम ढंग से नहीं करोगे एथिक्स फॉलो, तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे? फाइन्स बना हम्म। रहेगा, लॉस ऑफ प्रोफेशनल रेपुटेशन, being prevented from acting हम्म। as a director or officer of a public company in future, the possibility of being expelled by a professional accountancy body, and a prison sentence। सब ऑर्डर में। Ethics and profits. It is commonly argued that the primary objective of a company is to maximize the wealth of its shareholder. Acting ethically might be seen to contradict this objective. For example, while it may be ethical to incur costs associated with looking after the environment, such costs reduce profit. However, in modern society, companies are considered to be corporate citizens within society. Corporate social responsibility is increasingly important to investors and other stakeholders. It can attract green investors, ethical consumers, and employees, and so in turn have a positive impact on financial results. Thus, it could be argued that the performance and sustainability of a company may not be maximized unless it behaves in an ethical manner। मतलब हम्म। इसमें क्या बोला हम्म। था कि तूने मैंने कुछ बस पूछा था नोट कि डाउन have, किया है क्या? मैंने तूने कुछ ये नहीं नोट नोट डाउन डाउन किया? किया। अच्छा। ठीक है। लास्ट मैंने नोट डाउन किया था was एथिक्स एंड प्रॉफिट। मतलब इसका ये मतलब ना फर्स्ट था कि बेसिकली ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे जस्ट बाय द गुड कंडक्ट, की मतलब हाँ भाई मतलब एथिकल है यहाँ पे काम करना, अच्छे लोग हैं ऐसा। मतलब अभी स्टार्टिंग इन्होंने में इट यहाँ विल बी पे एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी ऐसा। स्टार्टिंग में इट विल बिकॉज बी एक्सपेंसिव बट इट माइट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स हु आर लाइक ग्रीन इन्वेस्टर्स बेसिकली, हु आर बेस्ड की एनवायरनमेंट मतलब प्रोटेक्ट होना चाहिए, हाँ मतलब काफी कार्बन अच्छा काम कर रही फुटप्रिंट। है कि वो रिसाइकल कर रही है, हाँ ऐसा रिसाइकल कर रही है तो अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसा एक अलग ऑडियंस को हिट करता है बेसिकली ऐसा। मतलब ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए सही है फॉर सस्टेनेबिलिटी। हाँ। शॉर्ट टर्म में लोग जल्दी मैक्सिमाइज करने का सोचते हैं। मतलब बेसिकली दे सेइंग कि एथिक्स एंड प्रॉफिट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, हम्म। बिकॉज मैक्सिमाइज करने के चक्कर में पीपल माइट नॉट डू इट एथिकली टू मैक्सिमाइज द एथिकली। प्रॉफिट। दे माइट गो अगेंस्ट द नेचर। या मेक बट सेंस, क्योंकि अगर तू चिप्स के पैकेट देखेगी तो वो प्लास्टिक के रहते, तो वो शायद सही नहीं है नेचर के लिए, लेकिन पैसा तो बहुत छापते हैं नेचर वाले। क्योंकि इट इज चीपर एंड वैसे इजी प्रिंगल्स सोर्स तो है। देखेगी तो मतलब प्रिंगल्स वैसा नहीं है, प्रिंगल्स कार्डबोर्ड पे करता है, विच इज लाइक हाँ, कार्डबोर्ड रिसाइकेबल, पेपर में आता है। लेकिन वो महंगा बहुत है करेक्ट करेक्ट। प्रिंगल्स 99 ऐसा। rupees का, I think it's after sale you get या something like that। ऐसा। फिर ये दो टीवाईयूज हैं, ये करना है। टीवाई यूज यस कहते हैं ना, पर ठीक टू है। कम।
Cookie is a design company. In recent years, the company has shifted into a virtual working environment with all employees now working remotely, typically from their home location. The directors are concerned about the company's most recent financial results, which show a drop in profits compared to previous 3 years. The finance director, Sophia, has suggested that the deteriorating performance may be in part due to shift in remote working and consequently a drop in productivity. The directors are considering the use of artificial intelligence software to monitor the level of activity of its employees and identifying areas of the business that may be under-resourced or where further training may be required. This software includes the ability to track the number of emails sent, the number of words typed, and the amount of inactive time in a given period. Sophia, who is ACCA qualified, is keen to introduce the software as quickly as possible with a view that it should improve productivity and therefore the results. Sophia has no experience with this software but has assured the other directors that it should be straightforward to implement. Cookie operate in a country where there is strict data and privacy laws which have recently been updated. Discuss the ethical issues raised by treatment of warranty provision. आंसर पे जाऊं सीधा. ओके. हाँ ये रहा. The finance director, Sophia, needs to understand the new technology being proposed and assess what issues, including ethical issues, may arise from the introduction of such technology. As an ACCA member, she must adhere to the ACCA Code of Ethics and Conduct. This code sets out the importance of the fundamental principles of confidentiality, objectivity, professional behavior, integrity, and professional competence and due care. Integrity is defined as being honest and straightforward, providing assurances to the board about the implementation of the software with no prior experience to support the assurance demonstrates a lack of integrity and professionalism. कि मतलब पहले कोई इसका एक्सपीरियंस था नहीं इस चीज का कि ये चलेगी नहीं चलेगी करके इसके लिए इंटीग्रिटी को हिट करता है. सोफिया also needs to consider the legality of the software and whether it would be compliant with the relevant laws and regulations, particularly in the light of the recent updates. She has a duty of professional competence and due care to ensure that she understands the recent changes in data and privacy laws. She should assess whether the company will remain compliant if Cookie decides to introduce the software. ये क्या था मतलब एक मिनट. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. अच्छा हाँ, एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स था. तो राइट मतलब बेसिकली लीगैलिटी है कि नहीं वो चेक करना है. ठीक है. Cookie will also need to be transparent with its employees about the use of such technology, and Sophia, along with the other directors, has a duty to make sure the company communicates its plan regarding the technology to its employees effectively. If Cookie's employees are unaware of the use of technology, this could be perceived to be unfair and also ethically immoral, which could have a detrimental impact on Cookie's reputation and potentially lead to loss of staff. हाँ मतलब क्योंकि उसको खुद को भी टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता है. अब वो गारंटी ले रही है, अश्योर कर रही है कि भाई सब सही रहेगा हम्म. विदाउट इवन नोइंग द हम्म. राइट. सोफिया शुड वो रेज राइट दीज नहीं हुआ ना फिर। इश्यूज. क्या क्या बोल बोल. बोली फिर वो गलत हो गया ना, इमोरल हो गया, हम्म. राइट नहीं हुआ ना। बराबर. Sophia should raise these issues with the other directors and make sure each issue has been appropriately addressed. She should not rush to implement the technology without proper due care and consideration of its use and the issues faced.
She should also be honest about her lack of experience with the software, and she should seek to arrange the relevant training for herself and others within the business. Cool. मतलब उसको ट्रेनिंग अभी लानी चाहिए अपनी कंपनी में, बिकॉज उसको खुद को भी नहीं आ रहा है. So that is professional behavior. Okay, that is professional behavior to comply with the relevant laws and regulations. Cool. नेक्स्ट पे जाए. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू क्या ना, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या था? प्रोफेशनल बिहेवियर ही था टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस. बट हाँ आई थिंक लास्ट यहाँ वाला पे correct है। आई थिंक यहाँ पे वही यहाँ आएगा पे ना आई लास्ट गेस में. हम्म, बोल बोल. पर बट सर ने आई गेस इस वाले पॉइंट को ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में कवर किया था आई गेस, लेक्चर में। मेरे को लगता है गलती से किया था। It should ओके. have been a part of professional behavior only because आई थिंक तूने पूछा clearly भी था ना laws and सर को. regulation। हाँ, तो सर ने ठीक बोला है. था कुछ नया पॉइंट निकालो अब। जस्ट टू कवर अप, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं भाई. TYU 2 ये वाला आपने नहीं किया था ना? टोटोरस. नहीं, ये वाला नहीं किया, ये वाला नया है. टोटोरस. Tortoise has a number of investments in listed shares that are designated to be measured at fair value through other comprehensive income. The finance director, Hannah, recruited an ACCA student accountant, Yasin, during the year on a temporary contract. Yeah, Hannah has asked Yasin to perform the year-end valuation of the FV, मतलब other comprehensive income. फेयर वैल्यू एनालिसिस। Fair value through other comprehensive income, right? Investments, and has instructed Yasin to measure their fair value using the present value of the expected future dividend receipts. Yasin performed the valuation and realized that this calculation gives a higher fair value than the quoted share price. So raise this with Hannah. Hannah instructed Yashin to ignore the quoted share price and has justified using this measurement on the grounds that Totoras does not trade shares in the short term, and so using quoted share prices will understate the value that Totoras will realize over the lifetime of these investments. तेरे समझा? नहीं, वापस वही. से पढ़ेंगे देखो समझ गया। नहीं नहीं नहीं, Hannah instructed Yasin to ignore the हाँ, quoted share price and has justified using this बेसिकली measurement. बोल. वो लोग एक पर्टिकुलर मेजरमेंट फॉलो कर रहे थे, बट एक हम्म. दूसरे मेजरमेंट के थ्रू उनको एक अच्छा प्राइस कोट हो रहा था। तो फिर उन लोगों ने वो प्राइस को एज अ बेस, वो मेथड को एज अ बेस ले लिया हम्म. इंस्टेड ऑफ द मेथड व्हिच वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। मेरे को लगता है ये इसमें हुआ है आई इन्हें गेस। जानबूझ के उस चीज को कम दिखाया है ना, शेयर प्राइस को. हाँ हम्म. हाँ हाँ हाँ। Totoros is seeking new finance. Hannah has been under significant. क्या था वो आवाज? इसका रेगुलेटर खराब हो गया और आज ही हुआ है, ओके, नो तभी ये पंखा इश्यूज. उल्टा बज रहा है। Tortoise is seeking new finance. Hannah has been under significant pressure from the board of the directors to strengthen the company's financial position to ensure the company is able to raise the level of finance required. Discuss why the finance director's fair value measurement is not in line with IFRS standards and discuss the ethical issues that raise. वापस से शेयर प्राइस पढ़ते हैं। है. हाँ हाँ ठीक है. नहीं, मैं बोल था कि शेयर प्राइस ठीक है है, तो मतलब ये टॉटल फ्लक्चुएटिंग हैज हो अ रहा है ना, नंबर ऑफ, ऐसा. हाँ फ्लक्चुएटिंग है। तो मतलब ठीक है. फ्लक्चुएटिंग है मतलब वो ओसीआई में जाएगा, वो तो है ही, मतलब पीएनएल में हम्म. ट्रांसफर नहीं होएगा हम्म. हम्म. अगर वो शेयर वाला। बट इसलिए हमें पूछा क्या है कि डिस्कस व्हाई फाइनेंस डायरेक्टर्स फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज नॉट इन लाइन विद आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स एंड डिस्कस द एथिकल इशू दैट अराइजेस। तो मतलब एक तो हमें डिस्कस करना है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्यों सही नहीं है और आईएफआरएस लाइन में नहीं है, एंड दूसरा कि एथिकल इशू क्या अराइज हो रहा है इधर, मतलब हम्म. एथिकल इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कौन सा वाला अफेक्ट कर रहा है। तो टॉटोरस हैज
a number of investments in listed shares that are designated to be measured at fair value through OCI. मतलब वो लोग through fair value through OCI इसको measure करते हैं. This is the basis. The finance director Hannah recruited an ACCA student accountant Yasin during the year on a temporary contract. Temporary के लिए इस person को hire किया जो एक ACCA recruited है. हम्म फिर Hannah has asked Yasin to perform the year-end valuation of this investment and has instructed Yasin to measure their fair value using the present value of the expected future dividend receipt. मतलब हम्म present value of expected future dividend receipt के basis पे उसने बोला है कि तू check कर. I think this is a हम्म different method. Fair value नहीं करके present value पे निकालो. ओके So Yasin performed the valuation and realized that the calculation gives a higher fair value than the quoted share price. So raised this with Henna. ठीक है, तो यासीन ने जब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया तो उसको वो हायर वैल्यू दे रहा है शेयर प्राइसेस का. हम्म तो उसमें ये डिस्कस किया हैना के साथ. हैना इंस्ट्रक्टेड यासीन टू इग्नोर द कोटेड शेयर प्राइस एंड हेंस ओके ओके. तो जो कोटेड शेयर प्राइस था दैट इज बेसिकली थ्रू फेयर वैल्यू. करेक्ट. हम्म जो बराबर कोटेड शेयर प्राइस है दैट इज बेसिकली थ्रू फेयर वैल्यू. एंड जो यासी ने कैलकुलेट किया दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. तो हैना ने बोला कि तू कोटेड भूल जा, मतलब फेयर वैल्यू वाला भूल जा एंड तूने जो हम्म कैलकुलेट किया है तो उस पर फोकस कर. तो इग्नोर द कोटेड हम्म शेयर एंड हेंस जस्टिफाइड यूजिंग दिस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड्स दैट Tortoise does not trade shares in the short term. एंड उसने ये बोला कि शॉर्ट टर्म पे नहीं ट्रेड करता है, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालो. प्रेजेंट वैल्यू इज फॉर शॉर्ट टर्म्स क्या? शायद क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रेजेंट वैल्यू में मेक सेंस कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करके इसलिए तू तेरी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही है आज की डेट की वैल्यू, ऐसा मुझे लगता है। बट वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना. सपोज अगर तू लीज कर रहा है, लीज इज अ हम्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. फिर तू अगर हम्म उसको मतलब फ्यूचर में हाँ अब हाँ उसका हाँ, वैल्यू समझा तू समझा, डिसाइड कर रहा है डिस्काउंट करने के तो लिए। उसका so using quoted share price will understate the value that Tortoise will release over the lifetime of these investment. Tortoise is seeking new finance. Hannah has been under significant pressure from the board of directors to strengthen the company's financial position to ensure that the company is able to raise the level of finance required. तो ये गलत कर रही है ना, क्योंकि वो प्रेशर में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कि वो हम्म फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब अच्छे लेवल पर लेकर जाए. तो ये ओके यहाँ पे आई थिंक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एक तो इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है बिकॉज शी बराबर। इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट. हम्म गड़बड़ घोटाला करिए. आई थिंक ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा सवाल उठ रहा है बिकॉज शी इज नॉट बीइंग फेयर. शी इज नॉट बीइंग फेयर. हम्म द value which is supposed to be used is to be quoted share price, but she is using the value which is giving her a higher value just because she has a pressure from the board to make sure कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छा दिखे. इसके लिए वो मतलब कोई भी बेसिस नहीं लेकर अकॉर्डिंग टू हर ओन ब्रेन वो अनफेयर होकर कुछ भी डिसीजन ले रही है. तो बराबर। वो उसके ऑब्जेक्टिविटी इंटेग्रिटी पे सवाल उठता है, ऑनेस्टी एंड फेयर फेयर वैल्यू पर वो. हम्म बट ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज नॉट इन लाइन विद आईएफआरएस स्टैंडर्ड. आई गेस मेरे को लगता है वो शॉर्ट टर्म वाला जो चीज है ना हाँ वो शायद आईएफआरएस स्टैंडर्ड के साथ मीट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है। कि ओके। इज दैट द प्रेजेंट सेम वैल्यू इज रीजन कि नॉट फॉर प्रेजेंट शॉर्ट वैल्यू टर्म. अपन लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं और अपना शॉर्ट टर्म है, हाँ हाँ इसीलिए तू बोल रही है कि डिनाई ऐसा? हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ. पढ़ना है। लेट्स ये होता क्या. हाँ ऑफ कोर्स. Tortoise is using an estimation technique that is unobservable to measure fair value. According to IFRS 13 fair value measurement, this method is considered as level 3 input. Tortoise's intention to hold the asset is not relevant. ये अपन ने नहीं सोचा था कि लेवल 3 इनपुट होगा। क्योंकि we did not connect chapter number 1 with chapter number 2. हाँ अपन ने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 चैप्टर 1 में पढ़ा था तो चैप्टर 2 हाँ में वो स्ट्राइक भी नहीं हुआ. वही। बट IFRS एक्चुअली 13 इट बोलना। मेक सेंस. या इट इट एक्चुअली मेक एक्चुअली मेक सेंस सेंस. क्योंकि क्योंकि वो क्योंकि यूज। इलॉजिकल था. हाँ
सेल्फ सेल्फ बेसिस है, कोई बेसिस ही नहीं था कि उसने अज्यूम किया कि ये पर्टिकुलर वो कर लो, ये हम्म पर्टिकुलर बेसिस पे कर ले। हम्म सही है। IFRS 13 states that fair value is a market-based measurement and not an entity-specific measurement. Tortoise should be measuring fair value using the quoted share price, being a level 1 input which is prioritized by IFRS 13. Financial statements are important to a range of user groups such as shareholders, banks, employees, and suppliers. These groups require the financial statements to faithfully represent the performance and position of the company so that they can make adequate investment decisions. The public trust accountants as a result of their professional status, and it is vital that this trust is not broken. Professional ethics are therefore a vital part of the accountancy profession, and both ACCA members and ACCA students are bound by its code of ethics and conduct by following the code of ethics. It is more likely that a faithful representation of the company will be offered because the needs of the users will be prioritized. If the sole purpose of using level 3 input is to increase the carrying amount of the investment, then the principles of integrity and objectivity have been compromised. The मतलब क्योंकि बेस नहीं है इसीलिए जो जो पॉइंट तूने बोला भाई बराबर राइट. आई एम द हैप्पी ना, कुछ तो दिमाग नाइस लगाया मैंने। nice. The fact that Hannah is under नाइस significant नाइस। pressure from the board creates an incentive to overstate the carrying amount of the investments, strengthening the company's financial position and creates a self-interest threat. If Hannah is unaware of the requirements of IFRS 13, then it could be argued that she is not complying with the ethical principle of professional competence. Stakeholders are becoming increasingly reactive to the ethical stance of the company. Deliberate falsification of the financial statements could harm the reputation of Tortoise. It could harm the reputation of the accounting profession as a whole. ठीक है ये तो इन जनरल पॉइंट्स ही है मुझे लगता है. नेक्स्ट तो यासीन is facing pressure हाँ from Hannah तो to यार, ignore. हम्म. जनरल पॉइंट्स आर द वन दैट वी कैन एक्चुअली मेमोराइज, कि या कि रेपुटेशन हार्म हो रहा है, टू मेक अ पॉइंट ऑन रेपुटेशन। एथिक्स इज देयर तो मतलब भाई किसी का तो रेपुटेशन खराब होगा ही, अगर फेयर वैल्यू वे में नहीं कर रहे हैं तो इट राइट. इज अ जनरल पॉइंट बट इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। या वो सही था। Yasin is facing pressure from Hannah to ignore the correct valuation figures, and the fact he is employed on a temporary contract may create a self-interest threat if he fears losing his job as a result of not allowing Hannah's instructions. As a ACCA student, Yasin still has a responsibility to ensure the financial reporting information is fair and accurate. Yasin should approach Hannah again and remind her of the basic ethical principles whilst attempting to persuade her of the need to amend the fair value measurement used. Yasin should document this discussion. Should the finance director remain unmoved, the accountant may wish to contact ACCA ethical helpline and take legal advice before taking any further action. ये भी काफी बेसिक है ये तो भाई लिटरली. बहुत सही पॉइंट्स था भाई। हाँ काफी बट बेसिक है भाई तो मेरे को तो आना बहुत चाहिए था. सही पॉइंट्स लगे, लाइक मतलब तो देखेंगे आई तो इन्होंने थिंक द सिर्फ मोर लेवल विल थ्री डू की ना, द बात की मोर है विल। पूरे इसमें. लेवल 3 की बात की है. हाँ, लेवल 3 की बात की है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, वो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बिहेवियर एंड ड्यू के, बोल ले. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू के। हाँ. और फिर इन लोगों ने बेसिक बातें की कि भाई रेपुटेशन खराब हो रहा है, एंड एज एन एसीसीए, बिकॉज इन लोगों ने एसीसीए स्टूडेंट को लिया है तो फिर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली है। फिर इन लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट की भी बात की, विच वी डिड इन ऑडिट, विच वाज नॉट इवन देयर इन द हम्म चैप्टर, सेल्फ इंटरेस्ट का कुछ, तो वो भी इन लोगों ने तो दे कवर्ड। भाई बहुत, वो थे ना, सेम टू सेम पॉइंट्स थे विद डिफरेंट वर्डिंग्स, रेपिटेटिवली उसको बस कवर किया उन लोगों ने। क्रेजी कवर किया है. अच्छा, कितना नेक्स्ट लेवल बड़ा आंसर था भाई ये।